In the yesterday session, we have seen coriander, we have seen cardamom, we have seen dill, and we have seen the fennel fruit in the yesterday's session. So remember, the phenolic ether in the fennel is nothing but the anethol, responsible for the sweet taste of this clove, sweet taste of this fennel. Then a ketone derivative known as a phencone, which is a pungent principle. The pungency of this phenol fruit is because of the phencone, right? So we was yesterday discussed this. The next part is nothing but the lemon peel and orange peel. So not much important, but I have to discuss it. तो लेमन पिल क्या होता है? लेमन का छिलका, लेमन मतलब अपना है नींबू, लेमन पिल, लेमन. So synonyms for this plant is nothing but the limonis, cortex limonis, fructus limonis. Okay. What is that? It is a lemon peel. It is the outer part. When it, most of the students, what they think, lemon peel means lemon. लेमन फ्लेवर मतलब क्या होगा? लेमन फ्लेवर मतलब उसका जूस होगा. दैट इज टोटली रॉन्ग. ऑरेंज फ्लेवर मतलब क्या होगा? उसका जूस होगा. दैट इज टोटली रॉन्ग. ऑरेंज फ्लेवर मतलब ऑरेंज का जूस नहीं होता है ना. बनाना फ्लेवर मतलब बनाना का जूस नहीं होता है. ये लेमन फ्लेवर मतलब लेमन का जूस नहीं होता है. वहाँ पे क्या होता है? उसका जो पील होता है, पील आउटर पार्ट ऑफ फ्रूट, that is collected, and oil glands present in that part that is broken, and that oil, that essence is used as a flavoring agent. It is not a juice of that lemon. It is not a juice of that orange. So lemon peel is the outer part of pericarp of the ripe fruit or nearly ripe fruit plant known as a citrus limonis. Citrus limonis, family Frutaceae. Family Frutaceae. Citrus limonis Frutaceae. Family Frutaceae. Citrus limonis is a dried outer pericarp of dried or nearly uh, nearly ripe fruit of Citrus limonis family Frutaceae. It should contain not less than 2.5% of volatile. So the geographical source is found in the India, cultivated in the Spain, Italy, California, Florida, Jamaica, Australia. In India, it is cultivated in different districts. Like Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, Punjab, etc. Not much important. Chemical constants. So 2 to 4% क्या होता है इसमें? Volatile होता है. Out of that, main important principle is a limonene. Limonene. Limonene is the main principle. 90% of volatile oil is composed of limonene, and citral is a 4%. Citral is a 4%. This is the main important component of volatile oil. तो volatile oil है इसमें 2 to 4%. उसमें भी volatile oil में important component क्या है? Limonene and citral. Limonene 90% limonene होता है, citral 4%. In addition to that, it has a geranyl acetate. Then other constituent of plant, hesperidine. Again, this is important. Hesperidine. Question आ चुका है इसके ऊपर. Hesperidine is also known as vitamin P. क्या बोलते हैं इसमें? Vitamin P. Hesperidine is known as a vitamin P because it decreases the fragility of your blood vessel. But आजकल यहाँ पे महाराष्ट्र में विटामिन पी अलग अलग इसके लिए यूज किया जाता है ना. लोग बोलते हैं यार अब तुम पीते क्यों, इतनी सारी शराब पीते क्यों? जो बेवड़ा होता है वो बोलता है इसमें विटामिन पी होता है. एस्पिरिन इज नोन एज विटामिन पी. इसमें विटामिन पी होता है. विटामिन पी इज नोन एज एस्पिरिन. एस्पिरिन इज विटामिन पी. Then, in addition to that, it has a pectin, calcium oxalate, bitter substance known as bitter substance होता है. Principal component of oil is limonene 90%, citral 4%. And remember hesperidine, which is known as vitamin P. It is an anti-fragility factor for blood vessels. Use क्या है इसका? Carbonative stimulant. ये तो common है in the perfume, and it is used as a flavoring agent. It is used for extraction of pectin and volatile oil. Pectin के लिए, volatile oil के लिए extra. Next is the bitter orange peel. ये क्या है? Bitter orange, not a sweet orange. अपना जो नागपुरी संतरा है वो नहीं है, ये अलग है.
Bitter orange peel. So synonym orange cortex, fructus auranti, and semili orange. Fructus auranti. Orange peel is a dry, fresh outer part of pericarp of fruit, ripe fruit or nearly ripe fruit of aurantium. Citrus aurantium family. Again Rutaceae. It should contain not less than 2.5% of volatile oil. केमिकल कांस्टेंट क्या सेम एज अ लेमन पिल, इसमें भी लिमोनिन होगा, सिट्रल होगा, पेक्टिन होगा, लिमोनिन सिट्रल पेक्टिन स्प्रेड. टेस्ट भी है इसका with the thick section of your concentrated HCl you have to add, you will get a dark green color. This taste is negative in case of sweet orange peel. आप जो ऑरेंज खाते हो ना, नागपुर का ऑरेंज संतरा, वो उसमें ये टेस्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है. ये टेस्ट पॉजिटिव होता है बिटर ऑरेंज पील में. So both are different. Now next part, this one is known as orange peel. Lemon peel भी ऐसा एक होता है. This one is known as nutmeg. Nutmeg RL. देखिए nutmeg. Nutmeg means it is again a drug containing volatile oil. So very important drug is that nutmeg. Again, it is also known as a myristica or nux moscata. In Marathi, it is known as Jaipal. Then it is a component of your condiment and spices. Jaipal, nutmeg, dried kernels of seed of the plant Myristica fragrans family, Myristaceae. Myristica fragrans, Myristaceae. Myristica fragrans means nutmeg. It is also important. ये nutmeg होता है. जायफल अपन जला म्हणतो. Condiment and spices. It is a fruit. It is known as a aerial part of this fruit. Kernel. Dried kernels of the seeds of Myristica fragrans family Myristaceae should not contain not less than 5% of volatile oil. ये कल्टीवेट किया जाता है मोलक्का, इंडोनेशिया आइलैंड, कैरेबियन आइलैंड, इंडोनेशियन आइलैंड. Okay, tropical and subtropical countries. In India, it is cultivated in the Karnataka. Sorry, it is cultivated in Kerala and Tamil Nadu. साउथ एरिया में ज़्यादा जो कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस होते हैं उसका प्रोडक्शन उसमें होता है. जैसे क्लोव, उसके बाद में कार्डेमम, नटमेग, इसमें सिंकोना, दालचीनी. Cultivation collection. So it is a well grown in the warm, humid climate. थोड़ा सा humid and गर्म climate लगता है. Grown in the location from the sea. मतलब altitude कितना चाहिए? Altitude 900 meter. Which kind of soil? Sandy loam soil and clay loam soil or red lateritic soil. Cultivated by sowing the seeds. इसका seeds को use करता है. It can be also raised by vegetative propagation. Seeds are sown in the nursery bed, but it takes 2 to 3 months for germination. 2 या 3 महीने लगते हैं seeds का germination में. And seedlings, they are transplanted in the field after 16 to 18 months. Fruits can be collected throughout the year, maximum from December up to May. Fruits are taken out of the kernel by natural or artificial means. Cultivation collection not much important. You can leave. याद रखना है इसको biological source. So chemical constant 5 to 16% of volatile oil. The main compound is myristicin, then ilimsin and saffron. Myristicin, that is 4 to 8%, ilimsin and saffron. Okay. इसमें एक फैट भी होता है, फैट. So in the nutmeg 30% fat is there, known as nutmeg butter. This is known as nutmeg butter contain trimyricin. Okay. Now this nutmeg is a narcotic. जायफळ जास्त यूज केलं ना मसाल्यामध्ये झोप जास्त येते. Narcotic, it is a narcotic. Narcotic effect of drug is due to myristicin. It is a methoxysaffron. Myristicin क्या है? Methoxysaffron. Saffron का directly. It is very poisonous. And it is very poisonous. Remember, myristicin is the principal responsible for the narcotic effect of this nutmeg. It's used as again aromatic stimulant, carbonative flavoring agent. Nutmeg butter is also known as a bandazo.
नटमेग बटर जो है उसको बंडा सोप बोलते हैं एंड इट इज यूज्ड इन द सोप इंडस्ट्री फॉर फॉर्मेशन ऑफ सोप. Volatile oil present in the nutmeg used in the treatment of rheumatism. Rheumatism में भी इसका यूज करते हैं. तो volatile oil of this nutmeg is used in the rheumatism. तो ये nutmeg का देखा है. Next one is nothing but cinnamon. Cinnamon. So again it is a very important drug. Cinnamon bark, इसका bark होता है. So it is also known as cinnamon bark, कालमी, दालचीनी और साइलॉन cinnamon. याद रखना है आपको, दालचीनी, साइलॉन cinnamon और cinnamon bark है ना, यूज करते हो आप कॉन्डिमेंट्स में. cinnamon bark, कालमी दालचीनी एंड साइलम cinnamon. सो ड्राइड इनर बार्क, क्या लिखा है यहाँ पे, ड्राइड इनर बार्क नॉट आउटर बार्क. ये देखो मैंने जब बोला था आपको बार्क में क्या होगा, कॉर्ट, कॉर्टेक्स, पेलेट्रम एंड मिडलरी रेस. तो ये इनर बार्क है तो इसमें क्या रहेगा, कॉर्क सेल्स आर एब्सेंट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर ऑफ दिस cinnamon. ये आएगा बार्क. So it is a dried inner bark of the shoot of the tree known as Cinnamonum xylenicum. Cinnamonum xylenicum family Lauraceae, and it should contain not less than 1% of volatile oil. It is an evergreen tree for tropical areas native to Sri Lanka. Sri Lanka में पाया जाता है, Malabar coast of India. Also found in the Jamaica, Brazil. Most of the world's requirement that is made by Sri Lanka, and hence true cinnamon is also known as a Sri Lankan cinnamon. तो ये जो सिनेमन बार्क जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ से जाता है, श्रीलंका से. मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्ल्ड इज फुलफिल्ड बाय श्रीलंका. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ श्रीलंका सिनेमन. ट्रू सिनेमन इज नोन एज श्रीलंका. नाउ कल्टीवेशन कलेक्शन. सिनेमन इज अ ट्रॉपिकल, इट इज अ क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज. इट नीड्स अ सैंडी और सिलिसिनस सॉइल. इसमें सिलिका ज़्यादा रहेगा. with the admixture of humus. Humus मतलब fertilizer. Humus मतलब it is a fossils of your organic होता है, जैसे grass वगैरह use the fossils humus. It grows up to altitude of 800 to 1000 meter. Rainfall required is 200 to 50 centimeter. Seeds are sown in the nursery bed first in June July. It takes 20 days for germination. After 10 or 12 months, seedlings are transplanted into the field in October, November. In the rainy season, at a distance of 2 meters. Trees are allowed to grow up to uniform. Trees are allowed to go up to, it will get a uniform brown cork formation. Brown colors bark. Now, harvesting is done in the rainy season because in the rainy season it is easy to peel off the bark. तर जर झाडा रेनी सीझन मध्ये काय होतं, झाड ओलं होतं. ओलं झाल्यामुळे जे बार्क असतं ना, बार्क थोडंसं फक्त आणि बार्क कॅन बी इझिली पिल्ड ऑफ, सोलून काढले जाईल इझिली. नाउ इट इज पिल्ड ऑफ बाय मेकिंग अ वर्टिकल अँड हॉरिझॉन्टल इन्सिजन्स टू द प्लांट. द बार्क इज अलाउड टू फर्मेंट. बार्क को क्या है 24 आवर्स के लिए रखना है शेड में. इट इज अलाउड टू फर्मेंट विच रिजल्ट इन द लूजनिंग ऑफ आउटर कॉर्क. बाहर का जो कॉर्क होता है वो लूज होता है और वो निकल जाता है, कॉर्क एंड कॉर्टेक्स. ड्यूरिंग द ड्राइंग बार्क कॉन्ट्रैक्ट्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्क्वील. ड्राइंग में क्या होता है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है. ड्यूरिंग द ड्राइंग बार्क कॉन्ट्रैक्ट्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्वील. क्वील मतलब एक ट्विस्टेड होता है. ट्विस्टेड जो बार्क होता है ना, जो इनिशियली जो बार्क है थोड़ा सा फ्लैट रहेगा, लेकिन जब ड्राई होगा ना ऐसा टर्न करेगा, तो बाद में इसको बोलेंगे क्विल. सो स्मॉल क्विल गेट ट्रैप्ड इनटू ए लार्ज क्विल टू फॉर्म ए कंपाउंड क्विल. दिखाएंगे इसको. माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर क्या है इसका, कॉर्क एंड प्राइमरी कॉर्टेक्स आर एब्सेंट. क्यों एब्सेंट है भाई, क्योंकि जब आपने बार्क आइसोलेट किया, उसको ड्राई किया, तो उसका लूज हो गया, वो लॉस हो गया. Outer cortex is loosened. Cortex. Then sclerenchymatous pericycle is prominent. Secretory cavities containing volatile oil. Calcium auxiliary is present in the parenchymatous cell. Starch grains in the cortical parenchyma and medullary rays. उसका use chemical constant. So 5 to 1% volatile oil होता है इसमें. 1 to 1.2% tannin होता है, known as a flavour tannins.
calcium oxalate starch, and sweet substance known as a menthol. Cinnamon oil जो होता है, it consists of a 60 to 70% cinnamon aldehyde. तो cinnamon oil में cinnamon aldehyde 60 to 70% होता है, important main component. उसके बाद में 5 to 10% eugenol होता है, उसमें benzaldehyde, okay, cuminaldehyde, pyridine and pinene. These are the chemical constants present in the cinnamon. Okay. Use of cinnamon. So it is used as a carminative, stomachic, mild astringent, flavoring agent, aromatic, antiseptic. इसका यूज क्या है, कार्बोनेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट, वो सब कॉमन रहेगा. इसमें भी वोलेटाइल ऑयल रहेगा, उसका यूज वही है, कार्बोनेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट है ना. उसके बाद में स्टोमैचिक, एस्ट्रिंजेंट की इसमें टैनिन है. Commercially, it is used as a condiment and spices used in the preparation of candy and dentifrices. Dentifrices मतलब जो आपका टूथ पाउडर वगैरह होता है, टूथब्रश, टूथ पाउडर, आप आजकल है ना रामदेव बाबा जी, आपके दांतों और मसलों के दांतों के साथ मसलों भी स्वस्थ रखिए, पतंजलि टूथपेस्ट का प्रयास कीजिए. तो उसमें भी ये रहता है, उसमें भी क्या रहता है, ये सिनेमा. केमिकल टेस्ट करेगा, वोलेटाइल ऑयल है. So drop of ferric chloride, pale green color is produced due to cinnamaldehyde, which gives a brown color with the eugenol, which gives the brown color, and with eugenol, which gives blue color. Pale green color is produced, cinnamaldehyde वो करता है brown color, eugenol देता है, and result final color is nothing but the pale green color. The volatile oil of cinnamon, a drop of ferric chloride, you will get a pale green color produced. Now cinnamaldehyde gives brown color and eugenol gives blue color. So resultant color is a pale green color. Now, in cassia cinnamon, so types the cassia cinnamon oil of cassia cinnamon oil brown color is, in cassia cinnamon oil brown color is obtained as it contains only cinnamaldehyde. Cassia cinnamon में सिर्फ cinnamaldehyde होता है तो brown color देता है. Alcoholic extract of bark plus 1 gram alcoholic extract of bark plus इसमें क्या ऐड करना है आपको, 1 ml of volatile oil on treatment with the phenyletazine hydrochloride give red colored phenyletazine of cinnamon. ये important है. Substituent and adulterant. We substitute by different varieties of cinnamon. तो पहला है variety जंगल cinnamon obtained from wild grown plant. ये wild grown trees होते हैं जंगल में, उससे ये bark isolate किया जाता है. Which is a dark in color. You can distinguish by macroscopically by just visual observation, and less aromatic and slightly bitter in taste. आपको जो authentic drug है, it is a light dark in color, okay? And it is aromatic. But jungle cinnamon is a dark in color and it is a less aromatic. Second होता है cinnamon chips, है ना. पोटैटो चिप्स तो बहुत खाया होगा मतलब. cinnamon chips pieces of untrimmed bark distinguished by presence of abundant cork cell. इसमें cork cell ज़्यादा रहेगा. Normal drug में cork and cortex are absent because it is inner bark. So untrimmed bark distinguished by presence of abundant cork cell. तीसरा adulterant होता है Saigon cinnamon. It is obtained from Cinnamomum laureri. Okay? Laureri. This is exported from the port of Saigon. Saigon का जो port होता है, वहाँ से ये export किया जाता है. And also grown in the China and Japan. So इसका distinguish है, it will have a cherries brown color and light patches. It is also having sweet taste. That is the distinguishing feature of the original. Next one is a Java cinnamon. Obtained from Cinnamomum burmani. Less aromatic than original drug, found in the form of double P. तो इसको मैक्रोस्कोपिकली आपको डिस्टिंग्विश करना है. ये डबल किल होता है, आपको ओरिजिनल ड्रग है ना, वो है ना कंपाउंड किल होता है. ओरिजिनल ड्रग इज अ कंपाउंड किल. जंगल cinnamon chips, Saigon cinnamon, Java cinnamon, and last है Cassia or Chinese cinnamon. So it is a bark obtained from Cinnamomum cassia, okay, from China and Kochi. Cassia cinnamon.
केसिया वर्क और चाइनीज सिनेमन को याद रखना है. केसिया सिनेमन इज नोन एज चाइनीज सिनेमन. Dried stem bark of Cinnamomum acacia, male lauraceae, not less than 1% found in the China, Myanmar, Sri Lanka. इसमें acicular type of the same auxiliary skill होते हैं. Some coxel are lignified. 85% semialdehyde होता है and small amount of ethanol. Coumarin present in the cassia bark. केसिया में coumarin present होता है जो आपकी नॉर्मल सिनेमन bark में नहीं होता. यूज उसका सेम एज द सिनेमन. दिस इज नोन एज सिनेमन प्लांट्स. सिनेमन के पेड़ होते हैं. बारिश की सीजन में उसको कट करके पील करते हैं. दैट्स व्हाई ये देखो यहाँ से पील करके बार्क निकल रहा है. सिनेमन प्लांट. दिस इज नोन एज सिनेमन बार्क. आफ्टर ड्राइंग यू आर गोइंग टू गेट सच काइंड ऑफ सिनेमन बार्क. सिंगल पील कैसे होता है, डबल पील कैसे होता है, मैं आपको यहाँ पे अभी नहीं है डायग्राम, आप देख लीजिए. Cinnamaldehyde, cinnamyl acetate, cinnamic acid and usual structures. तो आपने देखा होगा ये पत्ते भी यूज करते हैं कभी. तेज पत्ता कहाँ से आता है, इससे. वो गार्लिक. गार्लिक तो आपको फेमस होगा. लहसुन डेली खाते हो. सिनोनिम क्या है इसका, गार्लिक और एलियम. एलियम एलियम और इसको लहसुन बोलते हैं. लहसुन मराठी में हिंदी में. It consists of a bulb's underground modification of stem. It consists of a bulb from the plant Allium sativum, family Liliaceae. Liliaceae की फैमिली के इंटर कौन से हैं? आपका आपका एलो है ना, एलो that is belonging to family Liliaceae. और भी है. It is cultivated in the Central Asia, South Europe, USA, India. Cultivated in the all state and cultivated as a spices and condiment crop in the India. हमने भी कल्टिवेट किया है. Cultivation and collection. It needs a moderate clay loamy soil, well drained, need a cool and moist climate. During the maturity, it needs a dry climate. Cultivation is done by planting the bulbs. Bulb मतलब उसका जो होता है ना, लहसुन के जो छोटे-छोटे pieces होते हैं वो ही यूज करना है. Generally, it is sown in the month of September October. It is cultivated as an alternative crop for many other vegetables. है ना, जैसे टमाटो है, टमाटो के बाद में लहसुन है ना. मोस्टली ये जो कॉटन का क्रॉप है उस टाइम पे लगाया जाता है. केमिकल एंड केमिकल कॉस्टिंग. तो 29% इसमें कार्बोहाइड्रेट है, 56% प्रोटीन, अल्बुमिन रहता है. म्यूसिलेज इज देयर 0.06 to 1%. volatile oil. Volatile oil is important. Volatile oil consists of allyl propyl disulfide, diallyl disulfide, then allyl, yes allyl cysteine sulfoxide, yes allyl cysteine sulfoxide. आपको एली ऐसा टर्म दिखा ना तो बिंदस गार्लिक का नाम है ना. allyl propyl disulfide, diallyl sulfide, allyl, yes allyl cysteine sulfoxide और allicin. Allicin क्या है? Allicin is a yellow liquid responsible for the odor of garlic. गार्लिक का जो odor होता है ना, that is because of the allicin. It is a sulfur containing compound. याद रखना. यूज क्या है? Again carminative aphrodisiac. It is a sexual stimulant. Aphrodisiac. Then expectorant, stimulant and disinfectant. Used in the treatment of pulmonary condition. It is also used as a condiment masala. In the garlic is used as a anthelmintic. It will expel the worms. It is a rubefacient. Fresh garlic is used against the immune dysentery. Also used for the high blood pressure. Garlic blood pressure में भी काम आता है. Next is garlic तो आपको मालूम होगा कैसे दिखता है क्या. Next one is a तुलसी. तुलसी आपको तुलसी मालूम है लेकिन कहाँ पे, सिर्फ आपको तुलसी मालूम है कहाँ पे, सिर्फ सीरियल्स के तुलसी मालूम है आपको. वो तुलसी नहीं है, वो अलग तुलसी. सिनोनिम क्या है इसका? ओके, सिनोनिम्स आर इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. सिनोनिम सैक्रेड बेसिल, होली बेसिल. सिनोनिम याद रखो, सैक्रेड बेसिल, होली बेसिल. बायोलॉजिकल सोर्स का ड्राइड लीव्स एंड स्टिक. ड्राइड लीव्स ऑफ प्लांट नोन एज ओसिमम सैंक्टम, फैमिली का लेविटी. हर्बेसियस, हर्ब जैसे दिखने वाला प्लांट होता है, गार्डन में लगाया जाता है.
आपके घर के बाहर भी होगा. Okay? Much branch annual plant found in the throughout the India. It is a sacred to Hindus and commonly cultivated as a garden plant, and also it is also ground near to the temple. Now it is cultivated commercially for its volatile oil. Chemical constant case में तुलसी leaves consist of bright yellow color and pleasant volatile oil. कितना है 0.1 to 0.9%. So volatile oil content क्या है इसमें यूजेनॉल 70% यूजेनॉल. और किसमें होता है क्लोव में होता है. क्लोव CLOV क्लोव में यूजेनॉल होता है. then 3% कार्बेको 20% यूजेनॉल मिथाइल ईथर एंड कैरियोफाइलिन. तुलसी also consists of अल्कोलॉइड. कौन सा है वो नहीं. अल्कोलॉइड से उसमें ग्लाइकोसाइड से सैपोनिन है टैनिन से विटामिन सी है. यूज क्या होगा. इट इज एंटी बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइडल स्टिमुलेंट aromatic anti-cataratal anti-spasmodic diaphoretic. Also it is a good immunomodulatory agent. It is used in the treatment of earache. earache मतलब कान दुख रहा है आपको उसका. earache मतलब कान दुख रहा है. जैसे टूथ एक होता है. टूथ एक मतलब दांत दुखना. earache मतलब सिर दुखना. वैसे कान अगर दुख रहा है तो उसमें इसको सिर्फ इतना याद रखो. उसको biological source chemical constant use. Okay? So you might have seen this tools. Next is nothing but the black pepper. ब्लैक पेपर मतलब क्या. काले कलर का पेपर नहीं. ब्लैक पेपर मतलब क्या. इट इज नोन एज अ काली मिर्च और ऑल्सो नोन एज अ गोल मिर्च क्योंकि ये गोल होता है. अपनी नॉर्मली जो मिर्च होती है कैप्सिकम वो बड़ा होता है और ये क्या होता है गोल होता है. काली मिरी मराठी मध्ये आलं तर काळी मिरी. पिपरी और पेपर और काली मिर्च और गोल मिर्च. ड्राइड ड्राई फ्रूट्स ऑफ पेपर निग्रम. ड्राइड ड्राई फ्रूट्स ऑफ पेपर निग्रम फैमिली पिपेरेसी. Cultivated in the South India, Indonesia, Brazil, Malaysia, Sri Lanka. कल्टिवेशन कलेक्शन के लिए एनुअल रेनफॉल लगता है 250 सेंटीमीटर. रेड लॉमी रेड लॉमी सॉइल लगता है उसके लिए. सॉइल रिच इन द ह्यूमस सैंडलोम सॉइल cultivated by propagating, cutting or sowing the seeds. Okay. Plant bears a fruit after 7 to 8 years and can survive up to 60 years. ये दो डिसीज होता है पोलू एंड विल्ट. these are the important disease. उसके बाद में माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर नॉट इम्पोर्टेंट. epidermis followed by thin walled parenchyma. epidermis rectangular stone cells. inner pericarp is inner pericarp layer is brown colored made of parenchyma. pericarp perisperm oil glands and starch glands are also present. केमिकल कांस्टेंट देखो अल्कोलाइड रहेगा इसमें क्या रहेगा पिपरीन. piperine alkaloid is there. Okay, piperine 5 to 9%. Then piperidine, then volatile oil 1 to 2.5%. Pungent resin rate 6%. Volatile oil mainly consists of L-phelandrine and caryophyll. यूज क्या है aromatic stimulant stomachic carnate. Substitute है इसका पेपर अटेनु एटम पाइपर एटेनु एटम found in the Visakhapatnam and Andhra Pradesh, Madurai, in Tirunelveli, Tamil Nadu. In Piper brassis brassis Piper brassis found in the Tirunelveli, Nilgiri district of Tamil Nadu. Piper longum available in the Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala state, also known as a people mul in the Hindi. People mul बोलते हैं longum, Piper longum. तीन वैरायटी है एडल्ट पेपर अटेनुएटम पेपर ब्रासिस टैसियम देन पेपर लॉन्ग. ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बस इतना याद रखो. पिपरिडीन आर्टेमिसिया एनोवा सिनोनिम क्या है इसका क्वीन याओ देन स्वीट एनी. तो सिनोनिम में दो स्वीट एनी आर्टेमिसिया एनी. It is a Chinese herb. China में पाया जाता है. Chinese traditional herb. Artemisia annua family Asteraceae. It is endemic to the China. Grown in the Europe and America as a wild.
Also cultivated in the Vietnam, China, Iraq, Turkey, Australia. It is not found in the cultivated on experimental basis in the Gujarat, Jammu Kashmir part of India, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Karnataka. But it is not an Indian plant. It is a Chinese plant, Artemisia. और ये प्लांट इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट इज एंटी मलेरियल प्रिंसिपल. इसमें एंटी मलेरियल प्रिंसिपल होता है. माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर आइसो बायलेटरल टाइप ऑफ लीव्स आते हैं. अनुमोसाइटिक स्टोमेटा, ग्लैंडुलर ट्रैकोम एंड टी शेप्ड कवरिंग ट्रैकोम. और ये टी शेप्ड कवरिंग ट्रैकोम और एक प्लांट होते हैं, उसका नाम है पायरेथ्रम. पायरेथ्रम में भी ये टी शेप्ड कवरिंग ट्रैकोम होते हैं. अनुमोसाइटिक स्टोमेटा, ग्लैंडुलर ट्रैकोम्स. केमिकल कांस्टेंट आउट ऑफ 7 स्पीसीज, इसके 7 स्पीसीज होते हैं. ओनली आर्टेमिशिया अनोवा आउट ऑफ 7 species of Artemisia, only Artemisia annua contains artemisinin. इसमें क्या है? Artemisinin. Artemisinin is a very important for our purpose. Artemisinin ये क्या है? It has a anti-malarial potential. It is anti-malarial. Artemisinin, deoxyartemisinin. It is a sesquiterpene lactone. ये क्या है? Sesquiterpene lactone है with internal peroxide linkage. तो एज इज क्वेश्चन आता है, इस sesquiterpene lactone the internal peroxide linkage, that is a artemisinin having anti-malarial principle found in the Artemisia annua. Are you getting or not? समझ रहा है आपको? साउंड आ रहा है क्या? साउंड. सो along with this amyrin, luteolin, beta citosterol, sigma-sterol, artemisinic acid, artinium, artemether A and B, artemether and other constant. तो ये आर्टेमिसिन से ही बना है ड्रग्स, जिसे आर्टीमिथर बना है, आर्टीथर बना है. ये बाद में फिर अपना लखनऊ है ना, CDRL लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, उसने क्या किया? ड्रग बनाया है ना, आर्टिसुनेट. इसका यूज देखो क्या है. इट इज अ एंटी मलेरियल इफेक्ट बाय इट्स रैपिड. इट इज अ ब्लड सीजोंटिसाइडल. तो ये ब्लड सीजोंट्स क्या होते हैं, टिश्यू सीजोंट्स क्या होते हैं, ये आपको तभी समझ में आएगा जब अपन ये लेंगे malaria. So I will explain at that time. So most potent drug used in the cerebral malaria, artesunate and artemether. ये दो ड्रग है, artesunate and artemether. They are the derivatives of artemisinin. Artemether has been developed by Central Drug Research Institute, Lucknow. Artemisinic acid is an antibacterial. Also has a cytotoxic and anti-inflammatory property. तो ये artemisinin क्या है? Sesquiterpene lactone. याद रखना है, sesquiterpene lactone with the internal peroxide linkage. Sesquiterpene lactone with the internal peroxide linkage, amyrin bid. ये एंटीमैलेरियल होता है बेसिकली. ये याद रखो, आर्टेमिथर हैज बीन डेवलप्ड बाय CDR and Lucknow. Artesunate and artemether, they are the derivatives of artemisinin. तो ये प्लांट उसके लिए इट इज एंटी-मलेरियल प्रिंसिपल. पहला प्लांट था आपका क्विनिन ना, क्विनिन अल्कलॉइड जो आया था, सिंकोनासी, वो पहला प्लांट था जो एंटी मलेरिया है. उसके बाद में एंटी मलेरियल प्लांट ये दूसरा क्या है. नेक्स्ट इज नथिंग बट द क्लोव. क्लोव मुझे क्या है? लवंग. क्लोव मुझे लवंग. सिनोनिम क्या है? कैरियोफाइलम, क्लोव फ्लावर, क्लोव बर्ड्स. सो ट्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ यूजेनिया कैरियोफाइलस, फैमिली मार्टेसी. इट शुड कंटेन नॉट लेस देन 15% ऑफ क्लोव ऑयल. तो वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग, एक ही ड्रग है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट इन द क्लोव कितना होना चाहिए? 15%, नॉट लेस देन. इट इज इंडिजिनस टू अम्मोनिया मोलक्को. इट इज इन इंडिया. इट इज कल्टिवेटेड इन द साउथ ओनली, दैट इज नीलगिरी, तेंस्काई हिल्स इन द कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. कल्टिवेशन कलेक्शन इसका देखो, deep rich loamy soil, then with the high humus content, waterlogging of soil should be prevented. Then 150 to 250 centimeter rainfall is required. It is okay. Propagation is done by sowing the seeds. And seeds, they are sown in the August and October in the nursery beds. And after 6 months, the seedlings are transplanted into the field. It is grown along with the areca nut. ये जो सुपारी का पेड़ होता है उसके साथ में ग्रो करता है.
It is grown with the areca nut, coconut or nutmeg plant. Plant start flowering at the age of 7 to 8 years. 7-8 साल के बाद में इसको फ्लावर आता है. Flowers are hand picked or collected by beating with the bamboos. पेड़ जो है तो उसको बाम्बू से मारना पड़ता है. अगर गुस्सा है आपको तो वो जाके वहाँ पे निकलो गुस्सा. सो क्लोव्स आर हैंड पिक्ड, हाथ से किक करो या फिर बाम्बू से उसको मारो, क्योंकि सभी क्लोव्स नीचे और पहले नीचे कुछ बिछा हुआ है तो फिर क्या, कुछ बिछाया नहीं, नीचे मार दिया बाम्बू से, सब क्लोव्स का आप गिरे मिट्टी में, यूजलेस. पहले वहाँ पे पॉलीथीन उसको स्प्रेड करो, उसके बाद में बीट करो. माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर क्या है? एपिडर्मिस इज कवर्ड विद अ थिक कटिकल लार्ज अनोमोसाइटिक स्टोमेटा. याद रखना है, अनोमोसाइटिक स्टोमेटा. सीजोजिनस सीजोलाइसोजेनिक ग्लैंड्स जिसमें ऑयल रहेगा. क्लस्टर ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट क्लस्टर एंड स्मॉल नंबर ऑफ स्टोन सेल्स, स्टार्च इज एब्सेंट. ये हो गया माइक्रोस्कोपी. केमिकल कांस्टेंट क्या है? 15 to 20% क्या रहेगा इसमें? वोलेटाइल ऑयल. तो 10 to 13% टेनिन रहेगा, गैलोटेनिक एसिड, रेजिन, क्रोमोन एंड यूजिनिन. जो वोलेटाइल ऑयल है, मेन कांस्टेंट ऑफ वोलेटाइल ऑयल यूजेनॉल. 70 to 90% इसमें क्या रहेगा? यूजेनॉल. यूजेनॉल एसिड कैरोफाइलिन कीटोन एंड सम अल्कोहल. केमिकल टेस्ट है इसका. पीएस लेना है आपको क्लो का, प्लस स्ट्रॉन्ग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. निडल शेप्ड क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम यूजिनेट. यूजेनॉल है उसका सॉल्ट बन जाएगा पोटेशियम यूजिनेट और ऑब्जर्व. दूसरा टेस्ट होता है 1 ml क्लो का ऑयल लेना है, 5 ml अल्कोहल, 1 ml of ferric chloride solution. So it turns blue due to presence of phenolic hydroxyl group. Aqueous solution लेना है, aqueous extract of ferric chloride, blue black color due to presence of tannin. यूज क्या है? क्लो इज यूज्ड एज अ डेंटल एनालिसिस. ठीक है, तो कुछ भी सिली क्वेश्चन कभी भी आ जाता है कि फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज अ डेंटल एनालिसिस. तो ये आपको सबको मालूम है ना. दांत दुख रहा है तो एक क्लो ले लो, दांत के नीचे दबाओ, ऑटोमेटिकली आपका दर्द कम हो जाएगा. डेंटल एनालिसिस. कार्बोनेटिव, स्टिमुलेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, एरोमेटिक एंड एंटीसेप्टिक. इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सिगरेट. अगर आपको है यूज करना उसका तो सिगरेट में भी ये यूज होता है. इसमें क्लो. अगर आपको ब्रांड मालूम नहीं तो मैं ब्रांड बोल दूंगा आपको, नहीं तो फिर आप मेरे ऊपर ही शक करोगे. सर को कैसे? सर सिर्फ इसका ही नॉलेज नहीं, सबका नॉलेज होता है. हर एक फिल्म के पहले बोल देते, लेकिन आप क्या करते हो, आप सुधरने वाले थोड़ी. सो ड्रिंकिंग एंड सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, पहले ही बोल देते. और वही फिर बाद में उधर दिखाते कि सिगरेट कैसे पीता है. पूरा फिल्म तो उसके ऊपर ही चलता है ना. तो हीरो सिगरेट पीगा, हीरोइन सिगरेट पीगी, उसके बाद में उनका मस्त पे की वाइन का क्लास रहेगा, है ना. भले ही वो उसमें जूस डाल के पीते हो, लेकिन आपने को क्या लगता है वाइन है. आप तैयारी नहीं सुनने को कि यार जूस रहेगा उसमें, लेकिन फिर भी एज आजकल का हो चुका है वैसे ही. So clove is used as a dental analgesic, carminative, stimulant, flavoring agent, aromatic, antiseptic. Used in the preparation of cigarette, also used in the perfumery and manufacturing of vanillin. आप जो वैनिला फ्लेवर का है ना, वैनिला फ्लेवर का आइसक्रीम खाते हो, वो आता कहाँ से है ना. यूजेनॉल का कन्वर्जन होता है वैनिलिन. अडल्ट्रेंट, इसके ऊपर अभी जीपैट 2023 जीपैट 2023 में क्वेश्चन आ गया, अडल्ट्रेंट ऑफ क्लोव. आप जाके देख लो पेपर, यू कैन गो एंड चेक द पेपर्स. जो मैं पढ़ा था वो उसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है. जीपैट 2023. एम आई ऑडिबल? जीपैट 2023 क्वेश्चन आ चुका है इसमें. अडल्ट्रेंट फॉर क्लोव, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अडल्ट्रेंट फॉर क्लोव. ऐसा क्वेश्चन आया और यही ये 3 ऑप्शन ही थे, मदर क्लोव, ग्राउंड क्लोव. सॉरी नहीं, क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग था, मैं बोलता हूँ. ठीक है, सो पहले अडल्ट्रेंट देख लो. मदर क्लोव, first is a mother clove. They are a dark brown in color, ovate shaped, ripened fruits of clove, slightly aromatic, less volatile oil content than original drug. ये होता है मदर क्लोव. मदर क्लोव क्या होता है? दे आर डार्क ब्राउन इन द कलर, ओवेट होता है,
दे आर फुल्ली राइपन फ्रूट्स ऑफ द क्लोव एंड स्लाइटली एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक कम होता है एंड लेस वोलेटाइल ऑयल कंटेंट। मदर क्लोव। सेकंड होता है ब्राउन क्लोव। क्वेश्चन ये था, सो एक्सपांडेड फ्लावर बर्ड्स, एक्सपांडेड फ्लावर ऑफ द क्लोव ट्री, एक्सपांडेड फ्लावर्स ऑफ, नाम में ही रखा था, मतलब किसी को अगर आइडिया भी नहीं ना याद रहे, नाम में ही एक्सपांड होगा मतलब क्या होगा, ब्राउन होगा, इसका इसका रिलेशन लगा तो इमीडिएटली आंसर पता चल गया। एक्सपांडेड फ्लावर ऑफ क्लोव ट्री, volatile oil content is less than authentic drug. Then clove stalk, clove stalk. So it is used to adulterate the powdered clove. Powdered clove में clove stalk ऐड कर दिए, क्यों? पैसा कमाना है। It can be detected by, it can be detected by presence of isodiametric sclerosis. Prism type of calcium oxalate and ash value is different. Clove stalk contains only 5% oil. क्लोव बोलते बोलते मेरा भी दांत दुख रहा है, लेना पड़ता है कल। नेक्स्ट इज एग्जॉस्टेड क्लोव। एग्जॉस्टेड क्लोव मतलब क्या है? क्लोव फ्रॉम विच क्लोव ऑयल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, जिसका ऑयल निकल के आपको यूजलेस थिंग दे दिया, उसको बोलेंगे एग्जॉस्टेड क्लोव। कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? आप वाटर में डालो उसको, बीकर में। सो क्लोव फ्रॉम विच ऑयल हैज बीन रिमूव्ड फॉर डिस्टिलेशन, they are dark in color and do not show presence of oil and they will float on water. वाटर में डालो ये फ्लोट करेंगे। सो क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है जीपैट 2023, आप जाके चेक कर सकते हैं। ब्राउन क्लोव, सो मदर क्लोव, ब्राउन क्लोव, क्लोव स्टॉक एंड एग्जॉस्टेड क्लोव, these are the four varieties. They are used as a adulterant for Eugenia caryophyllus family Martesi. It should contain not less than 15% of volatile oil, है ना। उसमें volatile oil में क्या होता है? यूजेनॉल, है ना। बाद में यूजेनॉल एस्टेट कैरियोपाइलेंट्रिन हो जाता है। टैनिन भी होता है इसमें, याद रखना है। सो दिस इज नोन एज अ क्लोव प्लांट। क्लोव प्लांट कुछ ऐसा होगा एंड इट इज अ क्लोव फ्लावर बर्ड, या क्या है? फ्लावर बर्ड है, फ्लावर बर्ड एज इट इज वैसे ही लेते हो। इसमें आता है यूजेनॉल कैरियोपाइलिन, जिस तरीके से ऑयल आता है क्लोव। अदर इंपॉर्टेंट ड्रग कंटेनिंग टर्पिन, सो दिस विल बी सेकंड लास्ट स्लाइड फॉर टुडे सेशन। तो बाकी ड्रग डिटेल में नहीं लिया है, सिर्फ नाम से नेम, कांस्टेंट एंड यूजेस, क्योंकि मच इंपॉर्टेंट नहीं है। सो नेम एंड सिनोनिम बायोलॉजिकल कांस्टेंट एंड यूजेस। पहला होता है वेटिवर, उसको बोलते हैं खुश ऑयल। वेटिवर इसको बोलते हैं खुश ऑयल, है ना। खुश करने देता है, ऐसा नहीं कि आप नाराज हो खुश ऑयल ले लो खुश हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। तो उसको नाम बोलते हैं खुश ऑयल। सोर्स क्या है बायोलॉजिकल सोर्स? वेटिवेरिया जिजोम्यूओइडस, वेटिवेरिया जिजोम्यूओइडस प्लांट का नाम है, फैमिली है ग्रैमिनी। इसमें एक्टिव कांस्टेंट क्या है? वेटिवोन, वेटिवोन अल्फा एंड बीटा वेटिवोन। वेटिवेरॉल ये क्या है? यूज के स्टिमुलेंट, एरोमेटिक, फ्लेवरिंग एजेंट एंड रेफ्रिजरेंट। दिस सेकंड आता है रोजमेरी। ओके, इसका प्लांट क्या है? रोज मैरिनस ऑफिसिनालिस, रोज मैरिनस ऑफिसिनालिस फैमिली क्या है? लेविडी। इसमें वोलेटाइल ऑयल रहेगा, रेजिन, बोर्नियोल एंड उर्सोलिक एसिड, कार्बोनेटिव फ्लेवरिंग एजेंट, स्टिमुलेंट एंड प्रोपिशिएंट। नेक्स्ट द अनीस, इट इज नोन एज अनीस फ्रूट और अनीस सीड। उसका आई थिंक इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ चुका है। सो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम पिम्पिनेलिया अनीसम, पिम्पिनेलिया अनीसम फैमिली अम्बेलिबेरी, है ना। स्टार, स्टार जैसे होता है, स्टार, स्टार जैसा होता है। इसमें क्या रहेगा? एनिथॉल एंड मिथाइल चाविकोल, स्टिमुलेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, कार्बोनेटिव, एक्सपेक्टोरेंट एंड यूज्ड इन द कॉन्डिमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है जीरा। जीरा मतलब क्या? क्यूमिन, क्यूमिन सीड्स, क्यूमिनम साइनियम अम्बिलिबेरी, क्यूमिनियम, क्यूमिनम साइनियम अम्बिलिबेरी। इसमें क्या रहेगा? क्यूमिनल्डिहाइड, अल्फा बीटा पाइनिन एंड पैलेंटाइन, ये टैनिन से। स्टिमुलेंट, टैनिन नहीं, टर्पनॉइड से। स्टिमुलेंट, कार्बोनेटिव, यूज्ड इन द डायरिया एंड डिसेप्शन। नेक्स्ट आता है ग्लाउथेरिया,
Glautheria. It is known as oil of wintergreen or betula oil. Glautheria, oil of wintergreen or betula oil. Glautheria procumbens. Glautheria procumbens is the plant name. Ericaceae is the family. इसमें होता है ग्लाउथेरिन मिथाइल सैलिसिलेट. It is used in the rheumatism and it is a wormicide used in the wound treatment. The last slide है citronella. Citronella का biological source है Cymopogon nardus family की remedy. इसमें क्या है content oil में geraniol and citronella. Citronella aldehyde volatile citronella. Flavoring agent perfume, and it is a perfume for soap and mosquito repellent used in the mosquito repellent cream. Camphor क्या है Cinnamomum camphora, plant का नाम है Cinnamomum camphora. Lauraceae इसमें saffron रहेगा, D-pinene रहेगा, staldehyde रहेगा. Dependent incinerator, flavoring agent of patient and counterfeit. अजवान को बोलते हैं अपन कैरम ऑप्टिकम. ट्रिचिस पेमम अमेलिपेरी. थाइमोल रहेगा, साइमिन रहेगा, पी साइमिन है, कार्बिन. एंटीस्मोलिक है, एंटीफंगल है, एंटी इंसेक्टिसाइडल है, कार्बोनेटिव स्टिमुलेंट. देन आता है अनाटो एंड अर्नाटो. इसका बिक्सा ओलाराना फैमिली पिक्सासी ओरलाना बिक्सा ओरलाना फैमिली पिक्सासी. इसमें आता है बिक्सिन टर्नाडो. इट इज अ कलरिंग एजेंट फॉर फूड एंड कॉस्मेटिक. इसके ऊपर याद रखो पिक्सिन इज अ पिगमेंट फ्रॉम अनाटो यूज्ड एज अ कलरिंग एजेंट फॉर फूड एंड कॉस्मेटिक. इसके ऊपर एक अपना क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट होता है सैफरॉन. सैफरॉन खाते हैं ना आप केसर वाला दूध, केसर वाले गुलाब जामुन. कहाँ से आता है केसर? सैफरॉन. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम क्रोकस सटाइवा फैमिली इरिडेसी. ये कहाँ पे ग्रोन होता है? इट इज ग्रोन इन द कश्मीर इन इंडिया. सिर्फ कश्मीर में ही पाया जाता है. सम वे दैट इज आल्सो फ्रॉम पर्टिकुलर सीजन. तो उसका बहुत ही ज्यादा महंगा होता है सैफरॉन ओरिजिनल केसर. क्रोकस सटाइवा फैमिली इरिडेसी. प्लांट का नाम है क्रोकस सटाइवा इरिडेसी. इसमें होता है क्रोसिन एंड क्रोसेटिन एंड क्रोसिन. पिक्रोक्रोसिन is used as a flavoring agent, antispasmodic stimulant and immunococ मतलब immunity increase करने वाला. So this was regarding today's session. इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो. कुछ है ही नहीं, कोग्नोसी में मतलब कुछ नहीं.